का एक जरा हमें जान से प्यारा है। ये दे ये दे ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक तारीख़ी दिन है कि पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला कि पाकिस्तान माहौलियात का जो आलमी दिन है इसकी मेज़बानी करे। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, और यकीनी तौर पे जहां इसका क्रेडिट हमारी लीडरशिप, हमारे चेयरमैन, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे लीडर इमरान खान साहब को जाता है, उससे कहीं ज़्यादा इसका क्रेडिट आपको जाता है। ये जो फॉरेस्ट, हमारे गार्ड्स, फॉरेस्ट की टीम, पूरी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की टीम, खैबर पख्तूनख्वा की टीम, आप सबको जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की इस पुरवकार तकरीब का, जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक में। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में आप खड़े हो जाएं। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। World Environment Day 2021 being hosted by Pakistan। अब तलावत कुरान हकीम और सूरह रहमान की कुछ वर्सेस यहाँ पे आप समात करेंगे, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। Then which of the favors of your Lord will you deny? सूरह रहमान।
इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिर ज़बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। एक बार सब मिल के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So we'll formally start the second session of the World Environment Day 2021 being hosted by Pakistan. Assalamu alaikum and welcome to all. It's a great honor for Pakistan to host this World Environment Day for the first time in our history. Pakistan has a great story to tell to the world, that how did it become the first country in the world to meet the international bond challenge of restoring over 350,000 hectares of land into forest, and planted over 1 billion trees in the KP province, and now planting 10 billion trees across the country, 1 billion out of which has already been planted. Prime Minister Imran Khan has become a strong voice globally for this great cause of fighting climate change and making this planet a better place for generations to come. Pakistan has also passed a crucial milestone on the road to environmental protection by meeting the UN climate goals a decade before the deadline. इस पे तालियां होनी चाहिए. So Prime Minister Imran Khan's vision of clean and green Pakistan is being implemented quite effectively, and we really need to make more and more efforts together for the green development. We would like to thank United Nations Environment Program for giving us this opportunity to host this year's World Environment Day. Theme for this year is ecosystem restoration. The theme for this year, World Environment Day, is ecosystem restoration, with focus on resetting our relationship with nature. Today, Pakistan marks the formal launch of the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 to 2030. We will watch your video package on Pakistan's climate change, efforts of Pakistan to fight climate change. A video package, ये देश हमारा है. ये देश हमारा है, हमारा है, ये देश हमारा है, हमारा है. We planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter this, the effects of global warming. But one country cannot do anything. This has to be a combined effort of the world. ये हम सब की जिम्मेदारी है, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए. मजबूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से हैं, निगहबान भी हम इसके.
ये एक अल्लाह का एक तोहफा है हमारे लिए। अब ये वक्त है कि आपको जो यूथ है पाकिस्तान की, जो हमारा नौजवान है, वो अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में ले। हमारी हुकूमत आपके साथ मिलके ये सारे पाकिस्तान को बिल्कुल एक हरा पाकिस्तान बना देगी। रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है। निगहबान भी हम इसके, अच्छा, तो हमारा फिर ये थीम भी है कि ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका हर एक जर्रा हमें अपनी जान से प्यारा है। हम सब ने मिल के इस मुल्क का ख्याल रखना है। और क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है ये बहुत काम कर रहे हैं। मैं दावत दूंगा अब स्टेट मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि रूरल एरिया से इलेक्टेड हैं और आप सबकी पुरजोर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी। मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर साहिबा आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। प्लीज़ वेलकम द स्टेट मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जरताज गुल। कान भी हम इसके, मजबूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके। Shukriya, Shukriya. Earth is green and beautiful, and Allah has appointed you His stewards over it, and He sees how you acquit yourself. सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, ज़मीन सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत है, और अल्लाह ताला ने तुम्हें यानी बने हुए इंसान को इसका निगहबान ठहराया है, और वो देखेगा कि तुम अपने इस जिम्मेदारी से कैसे मुबर्रा होते हो। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे SCPM मलिक अमीन असलम साहब, डिग्नेटरीज, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। बेशक आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हम वर्ल्ड UN एनवायरनमेंट डे की 5 जून को मेज़बानी कर रहे हैं, और इसकी अहमियत 2 वजह से है। पहला ये कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के उस लिस्ट में शामिल है जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। दूसरा कि किस तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में और उनकी जो एक पर्सनल कमिटमेंट है, विजन है, जो प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने दिए हैं, किस तरह हम मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ रहे हैं। अगर मैं शुरू करूं 10 बिलियन ट्री सुनामी से, तो 10 बिलियन ट्री सुनामी में हम 85,000 जॉब्स दे चुके हैं, मज़ीद देना चाहते हैं, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर हम करना चाहते हैं। इसके अलावा 1 अरब दरख्त हम लगा चुके हैं और 9 अरब दरख्त लगाने की हम तैयारी कर चुके हैं। दूसरा बड़ा हमारा इनिशिएटिव क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, ये बिहेवियर चेंज की सबसे बड़ी मूवमेंट है, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर तमाम लोगों को ये कह रहा है कि आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर आपके अपने हैं। आप लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ बटाइए और अपने हिस्से का काम कीजिए। ये अवेयरनेस का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हमारा तीसरा बड़ा इनिशिएटिव ई व्हीकल पॉलिसी, जिसमें हमने दुनिया से वादा किया है कि हम अपनी एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपनी गाड़ियों को 2030 तक 30% यानी बिजली के ऊपर हम इंशाल्लाह ट्रांसफ़र करेंगे, और जिसके डिज़ाइन आपने यहाँ पे बाहर देखे हुए हैं। इससे हमारी एमिशंस भी कंट्रोल होंगी। हमारा अगला बड़ा इनिशिएटिव रिचार्ज पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर साल बारिशों का पानी ज़ाया हो जाता है और सैलाब के ख़तरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ लेकर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ थर में और बलूचिस्तान में हमारा पानी 1200 फुट से नीचे चला गया है, जिसकी वजह से खुश्क साली और कहत साली शुरू हो गई है। तो लिहाजा हम सैलाब के पानी को और अपने बारिश के पानी को तबाहकारी के बजाय अपने एसेट्स के अंदर चेंज करें, और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो रिचार्ज पाकिस्तान में, जिसमें हम डिप्लीशन ऑफ वाटर के बजाय अपनी वाटर टेबल को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। हमारा अगला प्रोग्राम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे रिसोर्स कम हो रहे हैं। हम साउथ पंजाब में और सिंध में फूड सिक्योरिटी और फाव के साथ मिलकर अपने फूड सिक्योरिटी के थ्रेट को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसका PC1 अप्रूव हो चुका है। हमारा अगला बड़ा इनिशिएटिव, जिसकी आज थीम भी है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, हमने 23 नेशनल पार्क कंजर्व किए। तारीख के सबसे बड़ी हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह न पोचिंग की इजाज़त देते हैं, न हम हंटिंग की इजाज़त देते हैं, बल्कि उसको हम अपने इको टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज जो है वहाँ पे इकोनॉमी होगी। हमारा अगला बड़ा इनिशिएटिव इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे नौजवानों के बारे में जो बात की कि
हमारी जो यूथ है उसकी 60% की जो तादाद है वो 30 साल से कम है। हम चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके लिए मौसमियाती तब्दीलियों के ये पैकेज लेकर आ रहे हैं उसमें आप हमारा हिस्सा बटाइए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं। वो वोट बैंक का नहीं सोचते हैं, वो फीते काटने का नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने आने वाली नस्लों के लिए एक सेफ पाकिस्तान का सोचते हैं। तो हम ऐसे लेजिस्लेटर पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आ रहे हैं T20 यानी ट्री 20 लेजिस्लेशन के जरिए हमारे नौजवान तैयार रहे कि वो इंशाल्लाह 20 तरह अपने ग्रेजुएशन में और अपनी मास्टर डिग्री में वो लगाएंगे और उसके एवज इंशाल्लाह उनको ग्रीन मार्क्स या 20 एक्स्ट्रा मार्क्स उनके सिलेबस में उनको मिलेंगे। मैं आखिर में अपना केस इस बात के ऊपर ख़त्म करके जा रही हूँ कि ये ठीक है कि हमें मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। ये भी ठीक है कि हमारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट है और हमारी खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं और सैलाब हर रोज़ पाकिस्तान में आए होते हैं। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने सोचा है कि इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से और मौसम की सख्ती की वजह से जो लोग नकल मकानी करते हैं, जो अपना घर बार छोड़ के जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होता है? 2010 में डेरा गाजी खान में और पूरे पाकिस्तान में जो सुपर फ्लड या सैलाब आया, उसमें डेरा गाजी खान में सिर्फ दरियाए सीन में 30 लाख लोग अपने घर बार छोड़कर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हुए। उसमें सबसे ज़्यादा वो खातून जो अपने बच्चों की हिफाजत भी कर रही थी और किफ़ालत भी कर रही थी, और उसको अपनी बेपर्दगी का भी ख्याल रखना था, क्योंकि हमारे यहाँ सख्त पर्दा सिस्टम है। और इसके बावजूद जो अपने बच्चों की किफ़ालत करती थी, खुले आसमान तले रहती थी, और जो उसकी ज़रूरियात थी वो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के किसी मर्द को नहीं पता। जब उसकी बारी आती थी रिलीफ की, जब उसको मदद की बारी आती थी, तो उसको कहते थे कि बीबी जाके पिछली और आखिरी लाइन में खड़ी हो जाओ या अपने घर के किसी मर्द या सरबराह को भेजो। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं चाहती हूँ कि हमारा मुकदमा और हमारी एडवोकेसी आप लड़ें, दुनिया को ये कहें कि आपकी मौसमियाती तब्दीली की वजह से, आपकी एमिशंस की वजह से, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी जिंदगी मुतासर हो रही है और हमारा माहौल भी खराब हो रहा है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन अब पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप हमारा मुकदमा दुनिया में लड़े, साउथ एशिया की फर्स्ट क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन पॉलिसी लेकर आएं और खवातीन को उनके हिस्से का रोल और रिलीफ दीजिए। आई रेस्ट माई केस। आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Zartaj. Moving on, we have a message from the President of the World Economic Forum, Mr. Borje Branda. He has an experience of working in Norwegian public sector as Minister of Foreign Affairs, Minister of Trade and Industry, and Minister of Environment. A very strong voice for protecting the environment. Please welcome Mr. Borje Branda. Your Excellency, Prime Minister Khan, ladies and gentlemen, it's a great honor to address this high-level event hosted by Pakistan on the occasion of World Environment Day. As the world comes together for the launch of the UN Decade for Ecosystem Restoration, we must realize that we do this not to save the planet per se, but to save ourselves. Our economy is embedded in our society, which in turn is embedded within the biosphere. To live within the planetary boundaries, we must strive towards aligning our economic and social activities with the limits of the biosphere. The World Economic Forum's New Nature Economy reports identified that more than half the world's GDP is moderately or highly dependent on nature and hence exposed to risks of nature loss. We are losing more value than we produce. If we continue our current path, by 2025, an estimated 1.8 billion people will suffer absolute water scarcity, and 2/3 of the world will be living under water shortages. And by 2050,
global crop yields are estimated to fall 10%, with some regions suffering up to a 50% reduction. As a result, world food prices are expected to rise by an estimated 30%. Business as usual is no longer an option. We must shift towards a net zero, nature positive, and socially equitable world. The time to act on it is now. The decisions we take today will bind us to a path for the coming years. And hence, adopting an action-oriented approach for the next decade is crucial for the protection, restoration, and sustainable management of our natural capital assets. Research shows that every dollar spent on key net zero and nature-positive activities, including ecosystem conservation and restoration, can generate up to $7 in the broader economy. But we need a system change that recognizes the value of natural capital and creates the right incentives for safeguarding it. The number of corporate commitments to reach net zero emissions has more than doubled over the past year. It is incredible. And over 70 governments have now pledged to restore 210 million hectares of land through the Bond Challenge, a global effort to restore the world's most degraded and deforested land. The World Economic Forum's 1T.org platform is helping to conserve, restore, and grow 1 trillion trees by 2030. Yesterday, the 1T.org Corporate Alliance launched a platform for companies to commit to forest conservation, restoration, and reforestation, act with integrity and transparency, and demonstrate leadership in support of the global restoration movement. To succeed, we must amplify the voices of youth, women, and local and indigenous communities at the front line of safeguarding nature. We must develop investment vehicles, policies, and education opportunities that meet their needs. And we must embrace and support their solutions for restoring nature through ambitious public-private partnerships. We need to better connect the grassroots with the grass tops of the world. This is why I'm thrilled that the UN Decade of Ecosystem Restoration is set to unleash a global ecopreneurship movement for a generation restoration. With our Uplink platform, the World Economic Forum is offering youth leaders and innovators of all ages an opportunity to share their best solutions for restoring nature and connecting them with investors, experts, and communities who can help them scale up. This decade, we all must work on improving investment, education, and capacity building for entrepreneurs who are at the front line of nature protection and restoration. As countries look to build back better and design post-pandemic recovery measures, let's remember that natural capital and ecosystem services underpin human health, economic growth, and societal resilience. I really applaud Pakistan's 10 billion tree tsunami that is restoring over 1 million hectares of degraded forests. Congratulations. Through its many nature-positive initiatives, Pakistan is showing that it is possible to combine the objectives of livelihoods, resilience, and ecological health. Thank you for walking the talk. Let us work together to ensure that this decade of ecosystem restoration puts us on a path to recovery, resetting humanity's relationship with nature, so that by 2030, we have arrived at a world that is net zero, nature positive, and sustainable. Thank you, President of the World Economic Forum.
Mr. Borje Branda, for your message. Now we are privileged to have with us Inger Anderson. She is live with us. She has years and years of experience in the areas of agriculture, environmental management, biodiversity conservation, climate change, energy, water resources management, and hydro diplomacy. We also thank you, Inger, for you approaching Pakistan and giving us this great opportunity for hosting the World Environment Day 2021. Please put your hands together for the Executive Director at the UN Environment Program, Inger Anderson. Well, thank you so much, Senator Faisal Javed. And if I may thank all of the people here, and of course to Prime Minister Imran Khan, to Minister Malik Aslam Khan, and to the Ministry of Climate Change for hosting this World Environment Day, the largest global platform for outreach on the environmental challenges of our time. World Environment Day 2021 marks the launch, as we have heard, of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, which aims to reverse the damage we have caused to nature. We must spare no effort to make this decade on ecosystem restoration a success, because we must stabilize the climate, we must protect nature, and we must stem pollution to create a world where the Sustainable Development Goals thrive. Restoring ecosystems is a remarkable solution. It slows climate change. It brings back lost biodiversity. It creates productive land for agriculture. It provides jobs, restores nature's buffers against zoonotic diseases and pandemics, and helps vulnerable communities adapt to the changing climate. But restoration alone won't solve all our problems. We must stop further ecosystem destruction. But how do we do this? By reforming agriculture, by changing how we build our cities, by decarbonizing our economies, and by moving to circular economic models. Restoration as a quick acting solution can buy us time to make these larger transformations. And that is why the Decade for Ecosystem Restoration aims to prevent, to halt, and to reverse the loss of ecosystems. Momentum is growing. We now have commitments to restore 1 billion hectares of land, about half of all that is degraded. And Pakistan is showing us the way. The Prime Minister recently planted the 1 billionth tree of the 10 billion tree tsunami. Bravo to all. I'm also very encouraged by a new and innovative program to swap debt for commitments to achieve conservation targets. And laudable is also the decision to halt the approval of new coal power plants and to pivot to renewables. As climate change is a key driver of desertification and ecosystem degradation, such a move is great news for nature. The task now for Pakistan and for all nations is to build on this momentum and deliver on all our commitments. But how do we get there? Well, allow me to put 4 points that should be on our priority list. First, we need to get the finance flowing. To meet the climate, biodiversity, and land degradation targets, financial flows to nature-based solutions must triple by 2030 and increase fourfold by 2050. So governments must allocate funds to restoration in the COVID-19 recovery packages that parliaments across the world are passing right now. Businesses, banks, investors, and insurers must reform their operations and their financial flows to restore the natural world. A key step is to start using the inclusive wealth measure of growth. Such an approach measures natural capital alongside human and produced capital. It allows us to make investment decisions that back sustainable growth and prosperity. For example, UNEP's recent inclusive wealth analysis of Pakistan's economy showed that the afforestation efforts underway are likely to increase natural capital and inclusive wealth. Pakistan's economy is growing in the right direction. Now, my second point is that we must protect those who manage the land in law and in deed. Research shows
that lands managed by local communities suffer less degradation. To empower local communities, we must recognize the right to a healthy environment and back it with the full force of the law. And here Pakistan has taken strides with green benches in its Supreme Court and all provincial high courts across the country. And my third point is that it is time to make our cities green havens. As our world urbanizes, we need to make nature a fundamental part of our cities. There's much we can do, backing urban agriculture, expanding green spaces, integrating nature's infrastructure with our built infrastructure, green our gardens and streets. This will deliver enormous benefits to city life, including natural cooling, cleaner air, food security, and healthier people and happier kids. And my fourth point is, it's equally important to restore the blue planet. We have made huge commitments on land restoration, and we salute that. But our marine and coastal ecosystems are also in trouble, and we need to see a massive increase in restoration commitments globally on marine and coastal ecosystems with backing from donors. So friends, excellencies, if we work hard in these 4 areas to get finance flows in tune with nature, to protect those who manage the land, to make our cities green, and to restore the blue planet, we will heal nature. We will slow climate change. We will feed the world. We will protect vulnerable communities. We will reduce pandemic risks. And we will, in essence, make everybody's lives better. Thank you again to Pakistan for your efforts. I encourage Pakistan now to keep delivering on your ambitious commitments. And I encourage all other nations to follow Pakistan's leadership and make this decade a roaring success. Thank you. Thank you, Inger Anderson, for being with us. आगे बढ़ते हैं, बलोचिस्तान से एक ज़बरदस्त बैंड तशरीफ़ लाया है. आपकी बड़ी मेहरबानी कादर चनाल ज़हरी साहब और आपकी जो टीम है वो आज माहौलियात का जो आलमी दिन है इसके हवाले से अपनी परफॉर्मेंस हमारे सामने पेश करेंगे. आप सबकी पुरजोर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं कादर चनाल ज़हरी और उनकी टीम फ्रॉम बलोचिस्तान टू परफॉर्म अ थीम सॉन्ग ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021. तालियां. बले 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 लश्कर सलाम अलैकुम. उम्मीद के वह खैर खुशियत मरोरे बाबो लश्कर तेना पीरो डाडा ना पिनट हसिया से दरख्त कलीन ना नोफ्ता खलो का दरख्ता ता से खाटी तू सुनोन बरो का पीड़ी नना खलो का दरख्ता ता से खाटी तू ले ताकि सरसब्ज मरे नना ज़ेबागा बलोचिस्तान. जीवात तरा बलोचिस्तान जीवात तरा.
पौधे लगाते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो, दिल से चाहत के पौधे लगाते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो। लश्कर न्यालाता भारतीय जीवात्रा बलूचिस्तान, जीवात्रा तरक्की। सब्जा सब्जा वतन की ये सारी जमीन, सब्जा सब्जा वतन की ये सारी जमीन, हर हंसी दिलरुबा से ये प्यारी जमीन। पाके सर इस जमीन को सजाते चलो, पाके सर इस जमीन को सजाते चलो, दिल से चाहत के पौधे लगाते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो, दिल से चाहत के पौधे लगाते चलो, गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो। अपनी धरती से दलदल मिटा देंगे हम, अपने खेतों से खुशबू उगा देंगे हम, पाक जज्बों से जन्नत बनाते चलो, गाते चलो, मुस्कुराते चलो, दिल से चाहत के पौधे लगाते चलो। जीवात्रा बलूचिस्तान, जीवात्रा शाला सरसब्जो शादाब बिबे। Baba doliya to bashmat sune, Baba opta asi arman se, Baba opta asi arman se, Baba bola nanat meran ka, Baba mutta nanat mardan ka, Baba khat mare mujada, Baba zeba watanna mashkala, Baba na yarman re, Baba andana na yarman re, dono khat Pakistan mare ji। बहुत बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियां बलूचिस्तान से आए हमारे भाइयों के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी ही देर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अहम खिताब करेंगे। नाउ वी हैव अ मैसेज फ्रॉम द UN Secretary General. He is a great promoter of reform and innovation. His commitment and efforts to fight climate change are commendable. He has declared 2021 as the year to reconcile humanity with nature. Please put your hands together for His Excellency Antonio Guterres. I am pleased to send greetings to the government and people of Pakistan, official hosts of this year's World Environment Day under the theme Ecosystem Restoration. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We have a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption, and escalating pollution. For too long, humanity has cut down the Earth's forests, polluted its rivers and oceans, and ploughed its grasslands into oblivion. We are ravaging the very ecosystems that underpin our societies. And in doing so, we risk depriving ourselves of the food, water, and resources we need to survive. The degradation of the natural world is already undermining the well-being of 3.2 billion people, or 40% of humanity. Luckily, the Earth is resilient, but she needs our help. We still have time to reverse the damage we have done. That is why, on this World Environment Day, we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, civil society, and private citizens in an unprecedented effort to heal the Earth. By restoring ecosystems, we can drive a transformation that will contribute to the achievement of all the Sustainable Development Goals. The task is monumental. We need to replant and protect our forests. We need to clean up our rivers and seas, and we need to green our cities. Accomplishing these things will not only safeguard the planet's resources, it will create millions of new jobs by 2030
generate returns of over 7 trillion US dollars every year, and help eliminate poverty and hunger. The United Nations Decade on Ecosystem Restoration is a global call to action. It will draw together political support, scientific research, and financial muscle to massively scale up restoration. Everyone can contribute. Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. So let today be the start of a new decade, one in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. Thank you, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General. Now moving on, I would like to invite Special Assistant to the Prime Minister of Pakistan on climate change, and under the leadership of Imran Khan, Malik Amin. Aslam has previously championed the flagship Green Growth Initiative for the KP province, and now leading the 10 billion tree project for the entire country. भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं Malik Amin Aslam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है दुनिया में कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है. और इस एज़ाज़ के साथ पाकिस्तान आज एक ऐसा डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को ट्रिगर कर रहा है जो कि दुनिया की अगले 10 साल की सिमत को मुतय्यन करेगा. इस अगले 10 साल के अंदर तमाम दुनिया के साइंटिस्ट ये बात कर चुके हैं कि अगर इस अगले 10 साल के अंदर इस दुनिया ने अपनी सिमत को तब्दील ना किया तो फिर शायद इंसानियत खुद खतरे में आ जाएगी. इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ये 10 साल इस दुनिया ने अपनी सिमत तब्दील करनी है और माहौल को अपना दोस्त बना के चलना है. और पाकिस्तान को आज ये एजाज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक मिला कि माहौल के साथ हमने जंग नहीं करनी, माहौल को हमने अपना शरीक बना के और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट को लेके आगे जाना है. और इसी को इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं. और आज हम यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 4 बड़े अहम ऐलानात करना चाहते हैं जो कि दुनिया के लिए हम इंशाल्लाह सामने पेश कर रहे हैं. फ़िलॉसफी हमारे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की ये है कि हमने जहाँ पर नेचर को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर अपने लोगों का भी ख्याल करना है और उनको जॉब्स दिलवानी है. और अल्लाह के फजल से अभी तक जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें 85,000 जॉब्स दी गई हैं और इंशाल्लाह इस साल हम उसके अंदर 2 लाख जॉब्स का इजाफा करेंगे. और वो 4 इनिशिएटिव्स जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है उसके अंदर आज हम मेजर अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं कि जो 10 बिलियन ट्री का हमारा विजन था उसके अंदर हमने अपना 1 अरब दरख्त पूरा कर लिया है. और आज हम बॉन्ड चैलेंज के तहत 10 लाख हेक्टेयर या 1 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर करने का वादा कर रहे हैं दुनिया के साथ. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने अपने ऊपर लिया है. इसका हमें किसी ने नहीं कहा, किसी ने हमें इस पे जोर नहीं लगाया कि आप ये चैलेंज लें. ये चैलेंज हमने अपनी और अपनी नस्लों के लिए लिया है, लेकिन इससे दुनिया को भी फायदा है. इसी तरह और वो हमने रजिस्टर करा दिया है, कल हमें उसकी कंफर्मेशन मिल गई है. दूसरा जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है उसके अंदर हम अपने नेशनल पार्क्स को बढ़ा रहे हैं. जहां पर कोविड के अंदर तमाम दुनिया इस परेशानी में मुब्तला थी कि इसका मुकाबला कैसे करना है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ग्रीन स्टिमुलस लॉन्च कर दिया जिससे लोगों को नौकरियां मिली. नए नेशनल पार्क हमने बनाना शुरू किए और आज हमने पिछले 1 साल के अंदर 15 नए नेशनल पार्क बनाए हैं. और उसके साथ साथ हम नेशनल पार्क सर्विस लॉन्च करने लगे हैं जिसमें ट्रेनिंग मिलेगी आपको 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते की. उसकी एकेडमी हम बलूचिस्तान ज़ियारत में बना रहे हैं और उस ट्रेनिंग के बाद हम 5,000 यूथ को नेशनल पार्क्स के अंदर नौकरी देंगे. अगेन हमने नेचर भी प्रोटेक्ट किया और साथ नौकरियां भी फराम की हैं. तीसरा हमारा जो इनिशिएटिव है रिचार्ज पाकिस्तान. पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा हुआ है और एक नेमत पानी है पाकिस्तान की. यहाँ पर हर साल एक सैलाबी रेला आता है और जो तबाही फेर के चला जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो चला जाता है तो हम पानी को तरस रहे होते हैं. तो उसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमने एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से कॉन्सेप्ट किया है कि रिवर इंडस के लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर
15 ऐसी वेटलैंड्स हैं, ऐसी नेचुरल लेक्स हैं जो कि तबाह हो रही हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन बीच में से पानी गुजर के चला जाता है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम उस सैलाबी रेले को जब वो आएगा तो उसको हम डाइवर्ट करेंगे उन वेटलैंड्स की तरफ। उससे ना सिर्फ वो वेटलैंड जिंदा हो जाएंगी बल्कि जो हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो जिंदा हो जाएगा। ये रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इसके लिए 1 अरब रुपया इस साल मुख्तस किया गया है और 2 पायलट साइट्स के ऊपर हम काम स्टार्ट कर देंगे। और चौथा और आखिरी हमारा इनिशिएटिव ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर है। ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर इस वक्त दुनिया में जिद्दत आ रही है फाइनेंसिंग के ऊपर कि ये जो तमाम बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं इनका पैसा कौन देगा। हमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सिखाया है कि व्हेन यू ड्रीम डोंट वरी अबाउट योर वॉलेट, कि जब आप ख्वाब देखें तो फिर ये ना सोचें कि पैसे कहाँ से आएंगे, आ जाते हैं पैसे, नीयत साफ हो और आपकी कमिटमेंट हो। और हमने यही देखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बिलियन ट्री में भी देखा है और अब 10 बिलियन ट्री में भी देख रहे हैं। लेकिन हमने कुछ जिद्दत हमने भी की और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके जो दुनिया ने 3 बड़े इनिशिएटिव किए हैं। ग्रीन बॉन्ड, वो पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते वापडा ने लॉन्च किया $500 मिलियन का, और जब 500 मिलियन हमने दुनिया से मांगे डॉलर तो दुनिया ने हमें जवाब दिया कि आप 3 अरब ले लें हमसे। ये पाकिस्तान की ग्रीन क्रेडिबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से हुआ है। इसी तरह हमने ब्लू बॉन्ड पहला इंशाल्लाह उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते रिपोर्ट पेश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो ऐसा खजाना है पाकिस्तान के मैंग्रोव्स जो कार्बन बचाते हैं उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है जो तकरीबन आधे अरब डॉलर के बराबर है, उसको कैपिटलाइज करने के लिए ब्लू बॉन्ड। और फिर तीसरा जो नेचर बॉन्ड, जो भी इंगर एंडरसन ने बात की यूनेप की, कि नेचर बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब उन्होंने बात की कि कौन सा मुल्क पायलट करेगा तो सब मुल्क झिझक रहे थे कि पता नहीं क्या चीज़ है। पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया और कहा कि हम पायलट करेंगे दुनिया के लिए। और आज पाकिस्तान के साथ 3 ममालिक की बातचीत चल रही है और इसके अंदर ये होगा कि जो नेचर में आप इन्वेस्ट करेंगे आपको आपकी डेट या कर्जे माफ़ करके वो आपको वो पैसे मिलेंगे। तो ये वो जिद्दत है जो पाकिस्तान में हो रही है और इंशाल्लाह ये दुनिया के लिए भी कीमती है और पाकिस्तान के लिए भी कीमती है। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज for Pakistan to be hosting this World Environment Day, which is at the moment streaming live all over the world. And we have a lot of viewership looking at Pakistan to see what Pakistan is doing for the World Environment Day. And our message to the world is that we have trusted in nature and nature has paid back to us. And our message is that the world needs to trust in nature and it is time for nature. Thank you very much. What I loved about Pakistan was its wilderness, its mountains. I would make sure that we preserve this God-given beauty of our country. We started one of the most ambitious campaigns to plant 1 billion trees in 4 years. And against all odds, we did it. So when I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. 30,000 हम लोगों ने पौधे लगाए, 20 खवातीन ने। अब हम लोग खवातीन जो है वो मर्दों के शाना पे शाना काम कर रहे हैं। ये बलोच औरतें जाकर निगरानियां करती हैं, ऊँटों को भगाती हैं, बकरियों को भगाती हैं, उनकी नस्ल जो पौधों की खत्म नहीं करती और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहला तिमिर ना परो अब तो पहला कसा न चारता अनु इब्रान का नंबर रोजगार दाता अम्मा जिंदगी भर में शिक्याला भी कनो जैनानी पैगाम आदे हां शिमा भी मेहनत कने शिमा भी पुच्चा दस्ता सिलाई कने परो गरीब क्याला गरीब राने मन नाना वरगा मिर्ची आई के सांगार नहीं है, आटा नहीं है, जा उसको भी 2 रोटी दो। हम लोग खुद गरीब है, हमारा दिल अमीर है। जहाँ पे हम लोग मैंगोस की सीडिंग करते हैं, सीडिंग के बाद यहाँ पे एक पौधा ग्रो करता है जो घना जंगल बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की भी प्रोडक्शन होती है, ये फॉरेस्ट की भी प्रोडक्शन होती है। ये फॉरेस्ट फिर बाद में बर्ड्स के लिए भी एक होम टाउन बन जाता है। छोटी मछलियाँ यहाँ बड़े समुद्र में चली जाती है तो वहाँ पे लोकल माहीगीर के लिए सस्टेनेबल फिशिंग का जरिया भी बन जाता है।
यहाँ पे मैं ये जंगली जानवर हैं इनकी हिफाजत करता हूँ। मुझे खुशी होता है, मेरा घर भी यहाँ पे है और मेरा ड्यूटी भी यहाँ पे है। मेरा जो जिम्मेदारी है जानवरों की हिफाजत करना, कोई इनका शिकार ना करे, कोई इनको तंग ना करे। इधर नर्सियों में 5-6 साल से काम कर रही हूँ। मेरे साथ 8-10 लड़कियाँ भी काम करती हैं और इधर से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, अच्छा निज़ाम चलता है। अब मैं खुद 2 यूनिट नर्सिंग की मालिक हूँ। We involved the local communities. We first made them understand how important trees were for the future. We involved women in mountainous areas to grow nurseries, and it became one of the most successful campaigns in our country's history. We are honored to have with us the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, His Excellency Mr. Boris Johnson. He has urged the world leaders to step up with the plans for fighting climate change this decade. He is also going to chair the UN Climate Change Conference of the Parties in Glasgow, November this year. Please put your hands together for the Prime Minister of the UK, His Excellency Boris Johnson. On World Environment Day, I know that everybody is still focused on the global pandemic, coronavirus that we've been struggling with. But be in no doubt what this pandemic is. It is Mother Nature's revenge upon humanity for our failure to keep in balance with the natural world. That's what a zoonotic plague like COVID is. Jumping the species barrier because of the way we farm wild animals, because of the way we treat the natural world. And that plague, coronavirus, is going to be dwarfed by the catastrophic consequences of humanity's failure to combat climate change. Anthropogenic climate change that is driven once again by our actions and our activity. We need to redouble our efforts to control the rise in temperature, to keep it at 1.5 degrees. That means we all have to make massive commitments to transforming our economy and getting back in balance with nature. And I salute what Prime Minister Imran Khan has done in promising to plant, I think, 10 billion trees, a huge campaign of forestation already underway. I salute what Imran Khan is doing to replant the mangrove. Thank you, Prime Minister. There was some technical error. I'll check that. Moving. So we'll move on. It gives us immense pleasure to announce that the President of China, His Excellency Xi Jinping, has shared his message for today's World Environment Day convention. We truly acknowledge his great efforts for bringing everyone together for green development and harmony between man and nature. As they say in China, when people pull together, nothing is too heavy to be lifted. His Excellency Xi Jinping will also be chairing the UN Biodiversity Conference in China this year. I would like to request the Chinese ambassador to Pakistan, His Excellency Norong, to read out the President's message for us. Please put your hands together for the ambassador.
His Excellency Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. On this special day, it is my great honor to read the congratulatory message sent by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. Congratulatory message by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. As Pakistan successfully hosts World Environment Day 2021 in Islamabad, I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan, and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies attending this event. In a year that marks the beginning of the UN decade on ecosystem restoration 2021 to 2030, it is highly relevant that Pakistan hosts World Environment Day celebration under the theme of ecosystem restoration. Planet Earth is the one place we all call home. A sound ecosystem is essential for the prosperity of civilization. It is imperative that we respect nature, follow its laws, and protect it. In order to live in harmony with nature, climate change, biodiversity loss, aggravating desertification, and frequent extreme weather events pose serious challenges to the survival and the development of humankind. With the world being a community with a shared future, the international community must demonstrate ambition and take actions like never before to build a fair and equitable system for global environmental governance featuring win-win cooperation, and to promote sustainable development of humankind. The Chinese civilization has long valued harmony between man and nature. The concept of ecological conservation has been incorporated into the overall plan for building socialism with Chinese characteristics. As a participant, contributor, and a pace setter in the global efforts of ecological conservation, China is committed to following multilateralism, defending the UN-centered international system and the international order underpinned by international law, and improving global environmental governance. As the host of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, COP15, later this year, China will discuss with all parties things important to ecological conservation to inject fresh impetus into global environmental governance. The Pakistani government and Prime Minister Imran Khan have made the Clean Green Pakistan movement a policy priority. China commends Pakistan's commitment and stands ready to work with Pakistan and the rest of the international community to step up cooperation within the UN framework for a community of life for man and nature, and for a clean and beautiful world. I wish the World Environment Day celebration a full success. Xi Jinping, President, the People's Republic of China, 5th June 2021. लगे है शजर तो धरती को मेरी सांस आई है, माहौल दोस्ती मेरे वतन को रास आई है, जो थी बंजर जमी अब सब्ज जंगल पैरहन इसकी।